घूमने वाला गुलदस्ता गैंग आज टीचर्स यूनियन में भी है और वाइस चांसलर की ऑफिस में भी। The challenge for the Democratic United Teachers Alliance is to, of course, up the battle, up the campaign to ensure that whoever is displaced. बार-बार यूनिवर्सिटी का कुलपति झूठा दावा करता है एकेडमिक काउंसिल में कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10% से कम हुआ है। दो काबिल टीचर्स जो परमानेंट नहीं थे और परमानेंट नौकरी से उसको निकाला गया। समरवीर वैसे ही टीचर थे। डॉक्टर शुभदा, डॉक्टर लक्ष्मण से पहले यहां पे एक नाम आपको याद रखना है, वो है डॉक्टर समरवीर। जब डॉक्टर समरवीर का जान लेने वाला सिस्टम यहां पे मतलब चल रहा था, तब भी हम में से कुछ लोग, कुछ मतलब टीचर्स, स्टूडेंट्स कोशिश किया था कि मतलब इस बात को आपके सामने रखने के लिए, लेकिन वो बात अभी भी मतलब समाज या सिस्टम पूरी तरह से उसका करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया। आज आपके सामने सिर्फ 2 टीचर्स आपके सामने आ रहे, 2 काबिल टीचर्स जो परमानेंट नहीं थे और परमानेंट नौकरी से उसको निकाला गया। समरवीर वैसे ही टीचर थे। डॉक्टर समरवीर के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का या कुछ पब्लिक में बताने का शायद मौका ना था, शायद मतलब विकल्प ना था। लेकिन आज ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो आप सिर्फ नामों में इसको मत रखिए, आप इस मुद्दे को रखिए आगे। वो लक्ष्मण यादव से डॉक्टर शुभदा से डॉक्टर समरवीर से भी आगे, क्योंकि ये समाज का सबसे अहम मुद्दों में एक है। विद्या का, शिक्षा का मुद्दा है और इस मुद्दे में यहां पे पॉइजन मिला के जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है वो तो आप जानिए, कैसे कर रहा है वो आप जानिए, उसके बारे में लिखिए। उससे स्टूडेंट और टीचर और सिस्टम का कितना नुकसान हो रहा है आप दोनों टीचर के वक्तव्य से आपने सुना है। लेकिन थोड़ा मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी अगर कल किसी टीचर ने, किसी परमानेंट टीचर ने मेरे से पूछा था, सचिन ओवरऑल कितना टीचर का नौकरी गई होगी अभी तक इसमें, तो मैंने उनको ये मतलब आई एम कंपाइलिंग दैट डेटा एंड लेट मी टेल यू दैट डेटा इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर। किस तरह से मुस्लिम टीचर्स को इस यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, हाउंड करके, डिपार्टमेंट में चुन चुन के, और उसका कवर भी देते हैं। मैं आपको बता दूं, एक कॉलेज में एक मुस्लिम का अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके बाद वहां पे जो ऑलरेडी काम कर रहे 10 टीचर को निकालेंगे, या ऑलरेडी वहां पे मेरिट में आने वाले टीचर्स को बोलेंगे अब तो हो गया, इससे ज्यादा नहीं। ये वाला तरीका आपको 66 कॉलेज का डेटा जब हम लोग पेश करेंगे, जिसके बारे में एकेडमिक काउंसिल में मेरे साथ मेरा एकेडमिक काउंसिल का कोलीग्स भी जुड़ा है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बार बार यूनिवर्सिटी का कुलपति झूठा दावा करता है एकेडमिक काउंसिल में कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10% से कम हुआ है। बिल्कुल झूठ। मैं तो कल मेरे अपने टीचर को यह बोला, अगर 3000 अपॉइंटमेंट हुआ है तो आप इसका 40% आप ले लीजिए, मिनिमम है। और उसके बाद आप नौकरी जाने की बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो इससे ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट में इवन टच 50% और 60%। लेकिन कुछ लोगों को एक जगह से डिस्प्लेस करके दूसरे जगह पे दूसरे कोलीग को डिस्प्लेस करके वहां अपॉइंटमेंट करने के बाद उसको भी अपना अचीवमेंट बता के घूमने वाला गुलदस्ता गैंग आज टीचर्स यूनियन में भी है और वाइस चांसलर की ऑफिस में भी है। तो इसीलिए ये पूरा प्रश्न को आप लोग समझिए, जो स्टूडेंट्स को यहां पे बुला रहा हूं। I salute my colleagues who have come into the forefront and who have addressed the press meeting. But I would first request you to salute the spirit of the students. They might belong to an organization or other, but if they have come here to defend their teachers, to express their gross objection to the way in which their teachers have been handled by the administration after many years of teaching, whether it is Ramjas College, whether it is Hansraj College, whether it is Hindu College, whether it is Dayal Singh College, whether it is Zakir Hussain College, we have to respect and salute their spirit. Why they have come to defend their teachers,
why they have come to express their solidarity and rise in rage against this kind of a system, that we have to understand. तो ये पूरा सिस्टम का एक ढांचा आपके साथ होना चाहिए प्लीज, क्योंकि लक्ष्मण मेरा दोस्त है, डॉक्टर शुभदा मेरा कोलीग है, डॉक्टर समरवीर मतलब जो हमारा कोलीग था, ये सबको साथ रख के आपको ये कैंपेन चलाना है, क्योंकि मैं उसका भी एक एक पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ जिसके बारे में खुद डॉक्टर लक्ष्मण ने बोला था कि मतलब इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द लार्जर फाइट, वो लार्जर कॉज। तो इसीलिए हमारा कोशिश आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल एक मूवमेंट बनाने का है, एक कैंपेन बनाने का है और इनको एक्सपोज करने का है। देखिए, सोशल कैपिटल के बारे में आपको पता है, कल्चरल कैपिटल के बारे में पता है, फाइनेंस कैपिटल के बारे में पता है, लेकिन अपॉइंटमेंट में जब मनी और उनका एक आइडियोलॉजिकल कनेक्शन ही काम करता है, लिस्ट आता है पूरा, तब आपको मनी के बारे में भी मतलब मनी हैज एक्सचेंज हैंड्स, पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, मेनी टीचर्स हैव स्पोकन आउट इन पब्लिक, have come out with FB posts and whatnot about money exchanging hands, about other kinds of favors being sought. Shame. That is the kind of situation that we are facing. Many of our colleagues who have done this college and their colleges and university and students a lot of service over so many years, they have been displaced. Friends in the media for joining us today. These are just some concluding remarks on behalf of all of us who are part of the Democratic United Teachers Alliance. Of course, today at this press conference, many experiences were shared with respect to the most recent instances of displacement in various colleges. Today's cases, of course, are from North Campus, but the story of displacement of many qualified teachers who have given many years to build their institutions, to contribute to their institutions and students' lives, are in many off-campus colleges as well. And it's all those stories that we are somewhere trying to collate and share here in the media with friends so that it reaches more people. It's important to point out that it's the alliance, the Democratic United Teachers Alliance, that is continuing with the struggle, touching base with our displaced colleagues, talking about how to move forward to ensure that these displaced teachers come back into the system as permanent faculty. It is not the official duta, and it's an irony, it's a terrible situation because it's so many recent displacements happening across colleges, starting from IP, Ramjas, and also recently Zakir Hussain, not to have a properly formed not to have the Delhi University Teachers Association fully formed, also reflects that the current ruling dispensation that won the election is not at all taking teachers' issues seriously, this issue of displacement seriously. So it's the alliance of all oppositional forces in the teachers' movement that have come together and are taking this issue forward. I would say that this is a battle. This is a battle of common teachers, of teachers activists, of students against a regime that wants to control what is knowledge, what is taught in classrooms, and who gets to teach. And it is very distressing that so many of our colleagues and the data we are collating and putting together are without jobs today, don't have that job security that they were expecting after putting in 5 years, 10 years, 15 years, 20 years into this university. And that is why I would say that it's so worrying and so upsetting, not just to see that talent being thrown out, shown the door through a revolving door interview of barely 1 minute, 2 minutes, or even a very acrimonious, hostile interview of 20 minutes. The irony is that there are also these stories. It's unsettling to hear how teachers who are representing their departments as teacher in charge in the selection panel are literally begging कि please हमें ये टीचर जो यहाँ पे पहले से पढ़ा रहे हैं, इनका अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे एकेडमिशियन, उनको प्लीज रखने दीजिए. I mean, these are the kind of heartbreaking stories from the candidates who are shown the door to the teachers who are fighting in the panels to keep these teachers. It's been nothing but humiliating. It has been nothing but political cronyism and, of course, a lot of financial corruption as well. And this is a fight over knowledge and who gets to teach in this university. The challenge for the Democratic United Teachers Alliance is to, of course, up the battle, up the campaign to ensure that whoever is displaced, many who have already left Delhi. You see, the Delhi University Vice Chancellor keeps saying less than 10%, but how does he have these statistics?
because so many people after being displaced have gone back home to their hometowns, because where is there any chance in the kind of already fixed interviews that you will get a fair interview to face? So people have gone back home. Who's collecting their data? How can you say it's only 150 displacements? So of course we as the campaign, as the alliance, are going to push forward, and we are going to ensure at least minimum guarantee of counting of points. For every year of teaching you should get points, not just at the level of screening but at the interview level as well. So the remaining colleges, at least that justice is given, that how many years you put in. If you've been displaced, your chances stand to be retained in another college that is remaining in the interview process by giving you points for every year that you taught.